हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशन। सो आज की वीडियो में मैं जो आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हॉस्पिटल का एग्जाम हुआ है जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने कंडक्ट कराया है, उसके फर्स्ट 50 क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो जो पहला क्वेश्चन है वो है, ए हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट इज डिसओरिएंटेड एंड एक्टिवली psychotic which of the followings will be the plan for nursing interventions? So the options जो थे वो थे, request that the patient interact with peer, encouraging the patient to participate in unit program, reality orientation and involvement in the millennium. तो इसमें जो correct answer है that is option number C, reality orientation. जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था, ए पेशेंट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड डाइजॉक्सिन 125 माइक्रोग्राम बाय माउथ एवरी मॉर्निंग, डायग्नोज्ड विद हार्ट फेलियर. The pharmacy dispense tablet that contains 0.25 mg each. Being a nurse, how many tablets need to be administered in each dose? तो इसमें हमने ड्रग डोज कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला डिजायर्ड बाय इन हैंड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज करना था. तो पहले हमने इसको चेंज करना था कि लाइक इट इज 125 माइक्रोग्राम, लेकिन हमारे पास 0.25 माइक्रोग्राम में mg में अवेलेबल है, तो हमने पहले इसको माइक्रोग्राम में चेंज करना था और फिर हमने D/H मल्टीप्लाई बाई V से फॉर्मल आंसर निकालना था. तो जो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, हाफ टैबलेट. Now the next question is, a community nurse should include which of the following when informing a client about home care services? तो इसमें जो correct answer है वो है option number D, that is greater autonomy and control over self care are fostered. Because जो हमारा community health nurse का principle है उसमें यही है कि जब हम field में या home visit में patient को care provide करते हैं तो उस time पे हमने family को include करना है ताकि हम उनके skills को डेवलप कर सके और इन द एब्सेंस ऑफ कम्युनिटी नर्स दे कैन प्रोवाइड द केयर. सो इसमें जो ऑटोनॉमी है और सेल्फ केयर है उसको ये फोस्टर करता है. Now the next question is, which of the following is the best example of an ethical dilemma faced by a nurse? And the options are deciding whether or not to place a client in private room, deciding the order in which staff members should take their breaks, deciding whether or not to ask another nurse to care for very complex patient, and deciding whether or not to tell a client about the client diagnosis. तो इसमें जो correct answer है that is option number 4, that is deciding whether or not to tell a client about the client diagnosis. Now the next question is, when counseling the pre-eclamptic about her diet, what should the nurse encourage the woman to do? Avoid simple sugars, eat a well-balanced diet, restrict sodium intake or increase intake of fluid. तो इसमें जो correct answer है that is option number B, that she should encourage the women to eat a well-balanced diet. Now the next question is, when assessing a patient client admitted to hospital for diabetic ketoacidosis, which of the following clinical manifestation would the nurse expect? And the options are arterial blood PCO2 below 10, arterial blood PCO2 above 40. Option number C is a blood pH level above 7.5 and option number D is blood pH level below 7.3. So इसमें हमें पता है कि metabolic acidosis and this is related to डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इज रिलेटेड टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस. तो कीटोएसिडोसिस में हमेशा मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, तो इसमें हमने PCO2 के लेवल के साथ कंसर्न नहीं करना है. इसमें हमने जस्ट पीएच लेवल देखना है कि हमारा एसिडिक है कि बेसिक है. सो 7.5 shows acid basic and pH of less than below 7.3 shows acidic. So option number D should be the correct answer. Now the next question is, when nurse will administer liquid medicine to a 9-month-old child, which of the following method is appropriate? And the option number A is administer the medication with the syringe next to the tongue, mix the medication with the infant's formula in the bottle, allow the infant to drink the liquid from a medicine cup, and hold the child upright and administer the medicine by the spoon. So for the 9-month-old baby, the nurse should administer the medicine with syringe next to the tongue. So option number A is the correct answer. Now the next question is, the nurse hears the alarm sound on telemetry cardiac monitor, quickly looks on at the monitor and notes that
that a client is in ventricular tachycardia. The nurse rushes to the client's room and on reaching the bedside, the nurse should perform which action first and deliver the two effective breath, begin chest compression, determine unresponsiveness और open the airway. तो इसमें जो correct answer रहेगा वो है option number सी, दैट इज डिटरमाइन द अनरिस्पॉन्सिवनेस. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट को क्या है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है. तो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की वजह से इट विल लीड्स टू डिक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट. और जब हमारा कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा तो उस टाइम पे देयर आर चांसेस कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है ड्यू टू डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, क्योंकि कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है. तो उस टाइम पे पहले हमने पेशेंट का रिस्पॉन्सिवनेस चेक करना है, और अगर पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है तो देन स्टार्ट विद ABCD रेजिमेन, दैट इज एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन एंड डिफिब्रिलेशन. इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, an appropriate goal for the client with anxiety would be to ventilate her feeling to the nurse, establish contact with reality, learn self-help technique for reducing anxiety, and D is become desensitized to past trauma. So इसमें जो correct answer रहेगा वो है option number C, that learn self-help technique for reducing anxiety. Now the next question is, at 7 a.m. the nurse hang a new 500 ml bag of DNS and adjust the flow rate of 35 ml per hour at per order. If the IV infusion at the proper rate, how much fluid should be left in the bag when the day nurse make a round at 11:30 a.m. halfway through the shift? तो इधर जो correct answer है मेरे हिसाब से वो ऑप्शन नंबर सी रहना चाहिए, दैट इज इट शुड बी 340 ml, क्योंकि ऑलरेडी 35 ml पर आवर के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जितना हमारा फ्लूइड चला गया है उसको अगर हम 500 ml से माइनस करते हैं तो 340 ml बचना चाहिए. Now the next question is, a patient with 38 weeks of pregnancy is admitted in hospital in early labor. The patient is carrying twins and one of the fetus in breech presentation. The nurse assists in planning care for the patient and perform the following as the highest to the lowest priority action in care the patient. तो इनमें से कौन सी है प्रायोरिटी वाइज केयर जो कि नर्स करेगी? तो इसमें अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर बी है जो वो सही होना चाहिए, कि पहले तो अटैच इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग, क्योंकि फीटल हार्ट बीट चेक करना हमारी प्रायोरिटी है, फीटल वेलनेस देखना जरूरी है. देन प्रिपेयर द पेशेंट फॉर पॉसिबल सिजेरियन सेक्शन, क्योंकि ऑलरेडी ब्रीच पोजीशन है, ट्विन प्रेगनेंसी है. उसके बाद गैदर इक्विपमेंट फॉर स्टार्टिंग इन आईवी लाइन, और लास्ट में जो मेजर फंडल हाइट, मतलब इस टाइम पे इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, तो इट शुड बी द लास्ट प्रायोरिटी. सो ऑप्शन नंबर बी कैन बी द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, during antibiotic administration the nurse inspected 2-day-old IV site on a patient who is neutropenic and observed redness within swelling. The patient complained of tenderness. Which of the following intervention is the priority for the nurse to implement? And इसमें जो options है उसमें जो correct answer है वो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, बिकॉज इन्फॉर्मिंग द पेशेंट दैट IV विल नीड टू बी चेंज टू अ न्यू साइट, बिकॉज ऑलरेडी पेशेंट न्यूट्रोपेनिक है. ठीक है, पेशेंट का जो न्यूट्रोफिल काउंट है वो बहुत लेस है एंड पेशेंट को रेडनेस है बट स्वेलिंग नहीं है, तो पेशेंट इज एट अ रिस्क ऑफ developing infection. So that's why it will be the right to change the IV line. Now the next question is, which of the following description of dopamine hypothesis is accurate about the cause of schizophrenia? So the kidney cause excessive amount of dopamine in the body that the kidney do not readily excrete. So dopamine is not excreted by kidney, it is excreted within the brain. So this is wrong. There is an excess of dopamine found at the synaptic cleft in the brain. Too little dopamine in the brain causes hallucination. So again, this is wrong, because too little dopamine will lead to development of Parkinson. Now the abnormal level of dopamine cause structural brain abnormality. ये भी गलत है. तो इसमें जो option number B है, that should be the right answer, that there is an excess of dopamine found at the synaptic cleft in the brain that will leads to the schizophrenia.
Now the next is when the purpose is to limit the incidence of disease by controlling cause and risk factor, which of the following is right? So controlling the cause and risk factor is come under primary prevention. So primary prevention should be the correct answer. Now the next question is 15. The issue that determine an incidence of battery are: the patient has given false information about a treatment, the patient is judged incomplete to consent to treatment and has received improper care, care that the patient has refused is forced upon them without court authorization, and all of the above. तो इनमें जो तीनों स्टेटमेंट है ये इंसिडेंट ऑफ बैटरी को बैटरी से रिलेटेड है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए. Now the next question is, an antenatal client is informing the nurse of her prenatal sign and symptoms. Which of the following finding would the nurse determine the presumptive sign of pregnancy? Select all that apply. तो इसमें जो हमारा presumptive signs हैं वो हमारे यूट्राइन ग्रोथ को छोड़ के बाकी हो सकते हैं. लाइक इसमें फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, हमारा ब्रेस्ट टेंडरनेस हो गया, क्विकनिंग हो गया एंड एमेनोरिया. सो दीज symptoms or these all signs are the presumptive sign of pregnancy. So option number C is should be the correct answer. Now 17, a 9-year-old is about to have surgery. So physician ordered meperidine 20 mg IV preoperatively. The container read 50 mg per ml and the nurse should administer. तो again हमारा D by H into V वाला फॉर्मूला लगेगा जिसमें हमारा आंसर 0.4 ml आएगा. Now the next question is, while monitoring a 50-year-old client who is undergoing a treadmill stress test, which client finding will require the most immediate action? And the options are chest pain level 3 on a scale of 10, oxygen saturation of 91, heart rate of 134 beats per minute, and blood pressure of 152 per 88 mm of Hg. तो इसमें जो सबसे मेन है most immediate action is chest pain level 3 should be the immediate action. Now because it shows कि जो हमारा हार्ट है, जो मायोकार्डियल सेल्स हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं मिल रहा है, so that's why the patient is having chest pain. Now the next question is, which of the following would the nurse expect to assess in a client with long-term maladaptation to stressful event? Pulse 100, blood pressure 150 by 94 mm of Hg, अल्सरेटिव कोलाइटिस, प्रोफ्यूज डायफोरेसिस और डायरिया. तो इसमें हमने क्या चीज रखनी है ध्यान में? लॉन्ग टर्म माल अडेप्शन टू स्ट्रेसफुल इवेंट. पल्स बढ़ रही है, बीपी हमारा बढ़ रहा है, प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो रही है, जो डायरिया हो रहा है, ये हमारा लॉन्ग टर्म नहीं है, दीज आर द शॉर्ट टर्म माल अडेप्शन. लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस इज द एग्जांपल ऑफ लॉन्ग टर्म माल अडेप्शन टू स्ट्रेसफुल इवेंट. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. Now the next is, a catabolic enzyme joins 2 or more substance into the large molecule or cleaves a molecule into 2 or more parts, insert a substance between 2 or more existing molecules, act as a chemical messenger between amino acids. So catabolic enzyme क्या है? It is the breakdown of a larger molecule into the smaller parts. So option number B is the correct answer. Now the next question is, you are caring for the patient with T5 complete spinal cord injury. Upon assessment, you note flushed skin, diaphoresis above T5, and a blood pressure of 160 by 96. The patient reports a severe pounding headache. The series of immediate nursing action from the highest to lowest priority to be performed will be: assess the distended bladder and bowel infarction and correct the problem, loose the constrictive clothing, elevate the head to the 90 degree and place the extremity in dependent position. So इसमें जो according to me जो correct answer होना चाहिए, that is option number C, sorry, that is option number B, that is ACBD. इसमें क्या है कि सबसे पहले तो हमने assess the distended bladder and bowel infarction and correct the problem करना है. Then the second is elevate the head of the patient head to the 90 degree because the patient is showing the symptom of increased BP. Then उसके बाद जो हमारा D है, place the extremities in dependent position ताकि जो patient है उसका BP control हो सके. ठीक है. और लास्ट में है lose the constrictive clothing.
तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंड इसमें पेशेंट जो सिम्टम शो कर रहा है दैट इज ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। ठीक है, जो कि जिन पेशेंट्स को थोरेसिक इंजरी होती है, जो स्पाइनल इंजरी होती है एंड दैट इज अबव द लेवल ऑफ T6, उनमें हमें ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया देखने को मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a patient who has a recent surgery has been vomiting and become dizzy while standing up to go to the bathroom. After assessing the patient back to the bed, the nurse notes the blood pressure is 54/30 and the pulse is 140. The nurse hangs which of the following IV fluid to correct the condition. Now, पेशेंट का जो बीपी है वो हाइपोटेंशन शो कर रहा है एंड जो हमारा हार्ट बीट है वो टेकिकार्डिया। तो दीज आर द सिम्टम ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक, मतलब पेशेंट का जो है हाइपोवोलेमिया इज देयर। सो फॉर दैट 0.9 ns एट एन ओपन रेट इज द करेक्ट आंसर। सो 22 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a patient with serum sodium of 115 milliequi per liter has been receiving 3% normal saline at 50 ml per hour for 60 hours. This morning, the patient feels tired and short of breath. Which of the following intervention is the priority? To turn down the infusion, to check the latest sodium level, to assess the sign for fluid overload, and to place a call to the physician. So the patient is showing the symptom of short of breath, that are the symptom of fluid overload. तो हमें करेक्ट जो आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। Now the next question is, a nurse is caring for the patient after cerebral angiography with catheter insertion via left groin. So which of the following symptom donate an allergic reaction to the contrast media? And the options are discomfort in the left groin, hypothermia, stridor और hematoma in the left groin. तो एलर्जिक सिम्टम में हमेशा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसके हमें साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं। So option number C is the correct answer. The stridor will be present in the patient. Now the next question is, the four major principles of medical ethics are autonomy, beneficence, malfeasance, and justice. So the next is privacy, autonomy, beneficence, and justice. Autonomy, beneficence, universality, and justice. Autonomy, beneficence, and malfeasance and mortality. So option number A जो है वो correct answer है। Autonomy, beneficence, non malfeasance and justice are the four medical ethics. Now the next question is, a pregnant client is admitted to the hospital for preterm labor. The nurse first intervention will be to monitor for contraction and fetal well-being, obtain a fetal fibronectic and blood count, initiate IV hydration and begin tocolytic medication, and obtain a complete history and update the physician. So इसमें according to me जो role of nurse है that should be the first, that is monitor for the contraction and fetal well-being, because ये जो ब्लड रिपोर्ट्स हमने करानी है ये जब हमें फिजिशियन बोलेगा हम तभी भेजेंगे, ये जब फिजिशियन बोलेगा हम तभी स्टार्ट करेंगे। टोकोलिटिक एजेंट्स हम तो देंगे ताकि पेशेंट के हम लेबर को 48 आवर्स के लिए एक्सटेंड कर सके, है ना, लेबर को कम कर देगा थोड़े टाइम के लिए। एंड कंप्लीट हिस्ट्री एंड अपडेट द फिजिशियन, ये फिजिशियन खुद ही अपनी हिस्ट्री लेगा। सो ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि पहले हमने कॉन्ट्रैक्शन चेक करनी है कि किस तरीके की कॉन्ट्रैक्शंस हैं, और उसके बाद हमारा जो मेन कंसर्न रहेगा वो फीटल हार्ट रेट से रहेगा कि फीटल वेलबिंग ठीक है कि नहीं, बच्चा मूवमेंट कर रहा है, हार्ट रेट सुनाई दे रही है कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मदर को प्रीटर्म लेबर है। Now the next 27 जो क्वेश्चन था वो था, the client is immediate post procedure endoscopic retrograde cholangiopancreatograph ERCP हुई है, so which intervention should the nurse implement? Assess for rectal bleeding, increase fluid intake, keep in supine position, assess the gag reflex. So ERCP हुई है पेशेंट की, rectal bleeding से हमें कोई मतलब नहीं है बिकॉज ये हम ओरली करेंगे। फ्लूइड इनटेक अभी हमने नहीं देना है, ठीक है, जो जैसे चल रहा है वो चलने देना है। कीप इन सुपाइन पोजीशन हम रखेंगे पेशेंट को थोड़े टाइम के लिए, लेकिन जो सबसे मेन है दैट इज असेस द गैग रिफ्लेक्स, इनमें से जो सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि
विदाउट गैग रिफ्लेक्स हम पेशेंट को कुछ भी स्टार्ट नहीं कर सकते, हमने पहले गैग रिफ्लेक्स चेक करना है, उसके बाद ही हम पेशेंट को कुछ भी ओरली या लिक्विड डाइट स्टार्ट करेंगे. सो असेस द गैग रिफ्लेक्स इज द इम्पॉर्टेंट थिंग. Now the next question is, a 5-year-old child with high fever is vomiting. The doctor ordered acetaminophen 80 mg per rectum. Which of the following action by the nurse is appropriate? Position the client on the right side with upper leg bent. After medication, hold the child's buttock together. Ask the healthcare practitioner to order for oral acetaminophen and insert the medication into the rectum and place the child into prone position. So इसमें जो correct answer है that is option number C, that is insert the medicine into the rectum and place the child in prone position. Now you assess a client which just has returned to the recovery area after undergoing coronary angiography. Which information is of most concern? Pedal pulse are palpable at +1. Then apical pulse is 122 beats per minute and regular. Option number C is left groin has 3 centimeter bruised area, and option number D is blood pressure of 144 by 78 mm of Hg. So इसमें जो correct answer है that is apical pulse is 122 beats per minute and regular. This is the thing of most concern. इसमें ऑप्शन नंबर बी क्यों है? क्योंकि जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है आफ्टर कोरोनरी एंजियोग्राफी दैट इज हेमरेज, और जब भी पेशेंट को हेमरेज होगा तो हेमरेज की वजह से देयर विल बी द इंक्रीज इन द पल्स रेट, टैकीकार्डिया विल बी देयर. Now the next question is, a nurse priority related to client who are experiencing clinical manifestation of borderline personality disorder should be, and इसमें जो correct answer है that is option number A, that is set limits when the client exhibit threat of self-damaging behavior. Now the next question is, amylase has all the following property except it breaks down starch into sugar, it cleaves protein into amino acid, it is component of human saliva, and high serum level may indicate pancreatic inflammation. So इसमें जो correct answer है that is option number B, क्योंकि it cleavage protein into amino acid is the wrong answer. Now the next question is, a patient who is psychotic has just seriously cut his throat with plastic knife after hearing voice telling him to kill himself in this fashion. Mention priority wise nursing goal to the consider. So according to me इसमें जो correct answer होना चाहिए that should be option number C, कि सबसे पहले जो हमारी priority बनेगी वो है the patient will be free of auditory hallucination, because auditory hallucination is the cause for this जो उसने अभी खुद को कट करने की कोशिश की है. Then the second is the physical condition will stabilize, will be the second priority. Then the patient will identify new coping strategies, and at last the patient will not harm self. बाकी अगर किसी को इसका करेक्ट आंसर पता है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है. Now the next question is, the patient is caring for the nurse is caring for a patient post-operatively who develops sinus tachycardia. So which of the following intervention should the nurse perform? Apply warm blanket, administer atropine sulfate, positioning the patient in left lateral position, or manage the patient's anxiety. So in most of the cases जो sinus tachycardia है that is a normal phenomena, जिसमें कि जो हमारा हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो रहा है बट द रिदम विल बी नॉर्मल. सो इसका भी जो आंसर है वो मुझे कंफर्म नहीं है, बट इसमें अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर डी कैन बी द राइट आंसर, बिकॉज हमने पेशेंट की एंजाइटी को कम करना है, बिकॉज एंजाइटी कैन ट्रिगर द साइनस टेकिकार्डिया इन द पेशेंट. वार्म ब्लैंकेट देने का कोई फायदा नहीं है. देन अप्लाई एट्रोपिन सल्फेट एंड पोजीशन द पेशेंट इन लेफ्ट लेटरल पोजीशन. अगर इनका कोई रिलेशन है तो वो मुझे पता नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन नंबर डी कैन बी द राइट आंसर. Now the next question is, the nurse administer which of the following prescribed drug for the purpose of relieving both positive and negative clinical manifestation of schizophrenia. So इसमें जो correct answer है वो है option number B, that is dopaminergic medication should be provided to relieve both positive and negative symptom of schizophrenia. Now a terminally ill patient state, I wish we would have not cancelled our trip last year and I
kept putting it off and now I feel bad about it. The nursing student interpreted the statement indicating which of the following statement stages of adaptation of dying. तो इसमें जो patient है that is showing the symptom of depression, उसको guilt है, तो option number A can be the right answer. Now the next question is, which set of principle must be balanced to certain that any risk involved in medical treatment or procedure is overweighed by the benefit to the patient? So the options are A is autonomy and privacy. Option number B is dignity and justice. Option number B is beneficence and non malfeasance. And option number D is ethics and beneficence. सो इसमें जो हमारा होता है कि द रिस्क इन्वॉल्व इन द मेडिकल ट्रीटमेंट और प्रोसीजर इज ओवरवेट बाय द बेनिफिट टू द पेशेंट कम अंडर बेनिफिशियंस एंड मालफिशियंस प्रिंसिपल. सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट इज हाईएस्ट रिस्क फॉर pseudocysis? So and the options are, option number A is the client with lymphatic cancer. The option number B is the client with multiple miscarriages. The option number C is the client with celiac disease and the option number D is the client with grand multiparity. So pseudocysis की जो risk है वो option number B वाले client में सबसे ज़्यादा रहेगा. So that is the patient with multiple miscarriages. Now the next question is, the client is admitted with Hashimoto thyroiditis. The nurse is aware that he will exhibit sign of which of the following? Hyperparathyroidism, hyperthyroidism, hypoparathyroidism और hypothyroidism. So इसमें जो correct answer है that is option number D, hypothyroidism, because Hashimoto thyroiditis is a autoimmune disease जिसमें हमारी बॉडी के सेल थायराइड सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो जिसकी वजह से जो हमारा थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन है वो कम हो जाएगा. सो द पेशेंट विल बी प्रेजेंट विद हाइपोथायराइडिज्म. Now the next question is, the nurse should implement what precaution for a client who has scabies? So scabies is a contagious disease. क्लोज कॉन्टेक्ट और स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट की वजह से होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर. कॉन्टेक्ट प्रिकॉशंस शुड बी फॉलोड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the nurse is planning the care of a client diagnosed with acute gastroenteritis. So which nursing risk problem is priority? Impaired body image, self-care deficit, fluid and electrolyte imbalance or imbalanced nutrition. So though हमारी priority होगी, that will be fluid and electrolyte imbalance. So the correct answer will be option number C. Now the next question is, a client was admitted to psychiatric unit with major depression after a suicide attempt. In addition to feeling sad and hopeless, the nurse would assess for which of the following, and the option is anxiety, unconscious anger and hostility, guilt, indecisiveness, poor self-concept, meticulous attention to grooming and hygiene, and psychomotor retardation or agitation. So along with the feeling sad and hopelessness, the patient will be present with psychomotor retardation or agitation. So the correct answer is option number D. Now the next question is, protein catabolism can yield which of the following? Complex carbohydrates, glucose, free fatty acid or omega-3 fatty acid. So protein catabolism can lead to glucose formation. So option number B is the correct answer. Now the next question is, while reviewing the cause of gastroesophageal reflux disease with a patient, the area of the GI tract should the nurse identify as the cause of reduced pressure associated with GERD is pressure in the stomach, low esophageal sphincter, pyloric sphincter or duodenal pressure. So इसमें जो correct answer है that is option number B, that is low esophageal sphincter. Now the next question is, a patient is experiencing confusion in the immediate post-operative period. Which of the following assessment is essential to determine the reason of the confusion? So the correct answer will be the airway status, because if the airway was not proper, the patient will show the symptom of hypoxemia, and due to which there will be the confusion due to decreased blood supply to the, or blood and oxygen supply to the brain. So the next question is, the wife of a patient with paranoid personality disorder asked the nurse why the patient keeps blaming her for plotting against him. Which of the following is the correct appropriate response by the nurse? A patient with paranoid personality disorder suspect others' motive. A patient with paranoid personality disorder prefer solitary activities. A patient with paranoid personality
disorder lack interest or hobbies. A patient with paranoid personality disorder is emotionally detached. तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज वी ऑल नो कि पैरानॉइड पर्सनैलिटी के पेशेंट को हमेशा ये रहेगा कि जो दूसरा पर्सन है वो मेरे ऊपर कुछ करने की कोशिश कर रहा है, हमेशा दूसरों को वो सस्पिशियस। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. Now the next question is, the following are the mode of horizontal transmission of disease except contact, vector, common vehicle or genetic. So genetic is the correct answer. ठीक है, genetic is not example of horizontal transmission, it is example of vertical transmission. Now the next question is, which ethical principle is more applicable to highly publicized issue of universal healthcare? And the options are, option number A is justice, autonomy, नॉन मालफिशंस एंड बेनिफिशंस. सो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a 26-week gestation woman is diagnosed with severe preeclampsia with HELLP syndrome. The nurse will assess for which of the following sign and symptom. So the patient who is with HELLP syndrome will be present with epigastric pain. So this will be the concern thing that the nurse should check, and this symptom client with a hypoglycemia. This client requires close monitoring because of increased risk of which of the following. Select all that apply. So grave disease क्यों होती है? Grave disease is hyperthyroidism due to the increased secretion of thyroid hormone. So इसमें hypoglycemia नहीं होगा, hypothyroidism नहीं होगा. The patient will present with hypotension, extreme tachycardia and elevated temperature. So according to me, the correct answer should be option number D, that is C, D and E. Now the next question is, the nurse is admitting a client, a child suspected of having hyperglycemia. Which of the following assessment finding would support a diagnosis of hyperglycemia? Select all that apply. So इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ए, बी एंड डी. ए इज ब्लड विजन, बी इज hunger and option number D is polydipsia. So blood vision, hunger and polydipsia is the symptom of hyperglycemia in child, whereas pallor, headache and tachycardia are the symptom of hypoglycemia in child. So इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं. नेक्स्ट जो 50 क्वेश्चंस हैं वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी और मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगी. सो अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. एंड अगर किसी को भी लगता है कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन का आंसर मैंने गलत दिया है तो दे कैन कमेंट दैट इन द कमेंट बॉक्स, और उसका उनके मुताबिक जो भी उनको सही क्वेश्चन लगता है वो दे कैन टेल. सो थैंक यू.